Hey everyone, this is Shivangini, and today's lecture will be about commonly mispronounced words, as you can see on the screen. See, mispronounced words are those which are usually not pronounced in the way they are meant to be pronounced. Actually, जब भी हम बात करते हैं, किसी से conversation करते हैं, we speak a lot of words. But it's not always about what we speak, but about how we speak. तो क्या होता है ना, कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ किए जाते हैं जो हम मिसप्रोनाउंस करते हैं, जिनकी प्रोनाउंसिएशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और इसीलिए हम गलत प्रोनाउंस करते हैं. So what actually happens when you mispronounce a word in an interview or in any formal gathering, it creates a bad impression. तो उस bad impression को avoid करने के लिए important है that you learn the correct pronunciation of the words which are commonly used in your conversations. So let's get started. I have bring forth few words which will give you the correct pronunciation of them. The first word is floor. Floor. This is pronounced as floor. The next word related to it is flower. यहाँ आप क्या गलती करते हैं? People usually pronounce it as flower, but it's wrong. It's not flower, it's flower. Next, flower. Flour. यहाँ भी बहुत confusion है. ये दूसरा फ्लावर है. दिस इज़ नॉट फूल वाला फ्लावर, दिस इज़ फ्लावर, जिसे आप आटा भी कहते हैं. दिस इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड एज फ्लावर या फ्लोर, दिस इज़ ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज फ्लावर. सो FLOWER जो फूल होता है एंड FLOUR बोथ आर प्रोनाउंस्ड एज फ्लावर. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस वर्ड सी. RECIEPT. अब आप क्या करते हैं? आपको लगता है हिंदी में इट्स प्रोनाउंस्ड एज रिसीट और इंग्लिश में इसे कहते हैं रिसिप्ट. आई हैव गॉट अ रिसिप्ट, बट दैट्स रॉन्ग. इट्स नॉट प्रोनाउंस्ड एज रिसिप्ट, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज रिसीट. सी, आई हैव ऑल्सो मैंशनड द फोनेटिकल प्रोनाउंसिएशन जिसे आप रीड कर सकते हैं. सो इफ़ यू कैन सी हियर, आई विल शो यू. सी, receipt. This is not receipt, this is receipt. Okay, let's move ahead. Next we have TOMB. अब आप तो इसे आई एम श्योर बोलते हैं टॉम्ब, मकबरा जो होता है, बट दैट इज रॉन्ग. इट इज़ नॉट टॉम्ब, इट इज़ टूम. लास्ट में अगर MB है तो वर्ड को क्या बोलेंगे? टूम. दिस इज टूम. आई नो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ यूजुअली फ़नी. आपको सुनने में बहुत फ़नी लग रहा होगा ना दैट दिस इज़ टूम, बट इवन इफ इट इज़ फ़नी, इट इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. सो TOMB मीन्स टूम. नेक्स्ट वेरी रिलेटेड वर्ड इज COMB, जिसे आप कॉम्ब कहते हैं, विच इज़ रॉन्ग. दिस इज नॉट कॉम्ब, दिस इज कूम. लाइक TOMB टूम, COMB कूम. Next we have TOWEL, जिसे आप towel बोलते हैं, but this is not towel, this is towel. This is towel. So try to pronounce these words while watching the video. It will really help you. जब तक आप खुद pronounce नहीं करेंगे, listening will not help you. Firstly listen and then practice. Next we have this word creative. What is this? CREATIVE. Creative. 3 पार्ट्स में प्रोनाउंस करेंगे. Creative. Creative. Moving ahead. FEATURE. 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 Next we have CABIN. Cabin. Cab and in. Cabin. Next we have DATA. यहाँ बहुत लोगों को confusion होती है whether it is data, whether it is data. So basically in correct British English जो हम बोलते हैं it is data, but data is also not wrong. Americans usually use the word
data. So it is data. Data. Next, dengue. You've seen this is a very heard name. काफ़ी सुनते हैं आप, जिसे लोग कहते हैं डेंगू. भाई इसको डेंगू हो गया, उसको डेंगू हो गया. बट दैट इज़ रॉन्ग. दैट इज़ नॉट डेंगू. इट इज़ डेंगी. डेंगी. अब जब आप पहले एक दो बार बोलेंगे किसी ऐसे इंसान के सामने जिसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, देयर आर चांसेस दे लाफ एट यू कि व्हाट इज़ दिस डेंगी. बट नो, dengue is the only correct pronunciation. Dengue is wrong pronunciation. People mispronounce this word. So you don't have to mispronounce because you know the correct pronunciation. So dengue is not dengue. It is pronounced as dengue, which is caused by mosquitoes. Next we have bowl. It is a kind of utensils. It is not bowl. हम usually pronounce करते हैं bowl. Okay, bowl ले आओ, bowl में ये डाल दो, वो डाल दो. That is wrong. It is bowl. It is bowl. See, I have mentioned the phonetical pronunciation. bohl. Bowl. Bowl नहीं है. It is bowl. Next we have epitome. At first look, you'll think this is epitome. No, this is epitome. Epitome शायद आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा. Epitome refers to the ideal perfect example of something. For example, you see a girl. She is very beautiful. एक बहुत सुंदर लड़की देखते हो. So what you say? You say she is an epitome of beauty. जैसे हम बोलते हैं she is the paragon of beauty. So epitome, paragon is the same thing. Also, you should know the pronunciation. That is why it is not epitome. This is epitome, which means the perfect or ideal example of something. Next we have executive, जिसको आप executive बोलते हैं. People usually pronounce it as executive. No, that is wrong. This is executive. Like you can see, इसको टुकड़ियों में बांटें, divide it into parts, and then you will be able to make a proper pronunciation. Executive. Executive. This is executive. If you pronounce this word 3, 4, 5 times, you'll get used to the correct pronunciation. Next we have this day of the week, जिसको आप कहते हैं Wednesday. This is not Wednesday. D is silent. This is Wednesday. Wednesday. Wednesday गलत pronunciation है. So next time जब आप बोलेंगे, आप Wednesday नहीं बोलेंगे, आप क्या कहेंगे? Wednesday. Because Wednesday is the correct pronunciation. Next, monk. I am pretty sure that 90% of the people call it monk. But this is not monk. This is monk. O को आप O की तरह pronounce नहीं करेंगे. That is why this is not monk. This is monk. What is monk? Monk is monk. बोलने में, सुनने में funny लगता है. Not a matter. English is such a language कि कुछ words की pronunciation थोड़ी tricky है. You might find it very funny. But important क्या है? That you pronounce correctly. So monk is no more monk. It is monk. monk, monk. Next, gauge, जिसको आप gauge कहते हैं. It is used to measure things. It is not gauge. गाड़ी में भी होता है, vehicles में होता है. This is not gauge. This is gauge. Gauge. Gauge, pronounced as gauge. Next we have syndrome. Syndrome नहीं बोलोगे, syndrome. Syndrome. Okay. Next, it's easier. FEEL. Feel. Feel means किसी चीज़ को महसूस करना. Whether sometimes you feel happy, sometimes you feel upset, sometimes you feel angry. You have different types of feelings. So
F-E-E-L, feel, is pronounced as feel. F-E-E-L, feel. Next, F-E-double-L, गिर जाना, this is fell. Feel और fell में difference है. F-double-E-L is feel, F-E-double-L is fell. Fell means गिर जाना. Fall की past form fell. Fell means कहीं से गिरना. So F-E-double-L is fell. इसी से related word fill. F-I-double-L. Fill मतलब किसी चीज़ को भरना. You fill the glass with the water. You fill your water bottle. You fill this thing or that thing. किसी चीज़ को भरने को आप क्या कहते हैं? Fill. So F-I-double-L pronounced as fill. Next we have H-U-R-T. It is pronounced as hurt. Hurt यानी लगना, बुरा लगना या physically किसी को लग जाना. It is pronounced as hurt. H-U-R-T pronounced as hurt. Then we have H-E-A-R-T. और बहुत से लोग इसको भी hurt ही कहते हैं. That I have a pain in my heart. So this is not hurt. जो आपका दिल है, it is not hurt. या your दिल can be hurt but it is not called as hurt. दिल को कहते हैं heart. Heart. So H-E-A-R-T, आपका दिल, उसको आप pronounce करेंगे heart. On the other hand, H-U-R-T, लगना, is pronounced as hurt. So your heart can be hurt. Did you understand? आपके दिल को बुरा लग सकता है. Your heart can be hurt. तो अगली बार से जब दिल की बात होगी, जब आप अपने बॉडी ऑर्गन दिल के बारे में बात कर रहे हैं, so you'll say heart. It is not hurt. B-O-U-G-H. पेड़ों की टहनियाँ होती हैं, उसको कहते हैं बाव. बो नहीं बोलेंगे. B-O-U-G-H is not bow. It is pronounced as bow. Bow means किसी पेड़ की कोई भी टहनी या branch. It's called as bow. C-A-C-H-E, जिसको आप कैचे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, it is pronounced as catch. Catch. C-A-C-H-E, catch. Chaos, confusion. जब आप confused होते हैं, that situation is called chaos. C-H-A-O-S. Chaos. Chaos. So heavy end with the list of mispronounced words. Try to pronounce them again and again. आप धीरे धीरे जब pronounce करेंगे, you will be able to reach the perfection of pronunciation. Thank you, students.